Hello everyone, I hope you guys are well. Welcome to my channel Art with Care. This is my first voiceover video. बहुत लोगों ने पूछा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कौन सा पेंसिल यूज़ करती हूँ, कौन सा पेपर यूज़ करती हूँ ड्राइंग बनाते वक्त। ये जो है ये एक छोटा सा कमीशन वर्क है जो मैंने A4 साइज़ के पेपर में करवाया है। वैसे मैं कपल पोर्ट्रेट जो है वो A4 साइज़ के पेपर में करना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी इसे A4 साइज़ के पेपर में करवा के दिया है। A4 साइज़ के पेपर में क्योंकि बहुत डिटेलिंग से करना पड़ता है 2 जन का ड्राइंग। अगर आप ये बहुत छोटा भी होता है, अगर आप इसे फ्रेम वगैरह करवाते हो और दीवार में लगाते हो तो ये अच्छा नहीं लगता, दिखाई ही नहीं देता कि कैसा किया है, डिटेलिंग जो है दिखाई नहीं देता। तो इसलिए सारे आर्टिस्ट को भी मैं कहूँगी कि कभी A4 साइज़ के पेपर में जो है एक सिंगल पोर्ट्रेट के अलावा उसके अलावा कुछ और ना करें। कपल पोर्ट्रेट आप A3 में करवाइए, ये अच्छा होता है। तो इस पोर्ट्रेट में मैंने आर्टलाइन के पेंसिल्स यूज़ किए हैं। जनरली मैं आर्टलाइन के पेंसिल्स ही यूज़ करती हूँ, 4B, 8B और 10B वाले। 4B जो है वो शेड के लिए यूज़ करती हूँ, 10B थोड़ा सा जो है डार्कर शेड है। आप चाहे तो ये पेंसिल्स अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं या फिर लोकल शॉप में भी अवेलेबल होगा, शायद हमारे यहाँ तो नहीं मिलता। और हेयर वगैरह वो तो डार्कर शेड्स होते हैं, उसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया है, वो भी आप अमेज़ॉन से ही परचेज़ कर सकते हैं। आउटलाइन करने के लिए मैंने यूज़ किया है 0.5 mm का मैकेनिकल पेंसिल, और हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया है सकुरा का वाइट जेल पेन, वो भी आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर डार्कर शेड्स के लिए मैंने कुछ जगहों पे ब्लैक मार्कर का यूज़ किया है और ब्लैक पेन का भी यूज़ किया है। और भी बहुत सारे टिप्स हैं शेडिंग और पेंसिल पोर्ट्रेट्स के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow
Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound.